In last class, we did properties of quadrilaterals. So let us revise first. What are the properties of a parallelogram? In a parallelogram, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Opposite angles are equal, and diagonals bisect each other. Okay. Now, properties of rhombus, all the properties of parallelogram, but in addition to that, diagonals are perpendicular to each other. Okay, diagonals are perpendicular to each other. Now, next for a rectangle, all the properties of parallelogram. Each of the angle is a right angle. Each angle is a right angle here. Each angle is a right angle for rhombus. Rectangle. And each of the angle is a right angle, and diagonals are equal in length. That is the important one. Diagonals are equal in length. Now, next square. All the properties of parallelogram, rhombus, and a rectangle. Simple. All properties of rhombus and rectangle and a parallelogram. Okay. Rhombus के लिए all properties of parallelogram including diagonals are perpendicular to each other. Rectangle में एक और property add हो जाएगी 90 degree. All angles are 90 degree and diagonals are equal in length, whereas here diagonals are perpendicular. यहाँ पे perpendicular है, यहाँ पे equal in length है, और यहाँ पे सारी properties square के अंदर parallelogram की भी, rhombus की भी, rectangle की भी. Now, what is the kite? The diagonals are perpendicular to each other. Diagonals perpendicular है यहाँ पे. And second thing, the adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. Okay. Okay. Next, let's move on to our exercise. Question 1, state true or false. Give reason if false. Okay. So first one, all rectangles are square. Is it false or true? False. Why false? All rectangles are not square, because in square all sides are equal, whereas in rectangle all sides are not equal. Therefore, false. Now second, all rhombuses are parallelogram. Is it true? Yes. All rhombuses are parallelogram. हमने देखा हर कोई equal to parallelogram है. All properties of parallelogram देखो. All properties of parallelogram यहाँ पे भी है. All properties of parallelogram यहाँ पे भी है. All properties of parallelogram यहाँ पे भी है. ठीक है? तो it is true. All squares are rhombuses and also rectangles. Is it true or false? True. Reason, rectangles में all sides are equal. If all sides are equal, then it becomes a square. Rectangle के लिए अगर उसकी सारी sides equal हो जाए, all sides are equal, then it will become a square. Or angles are already 90 degree. All angles are already 90 degree. अगर उसकी चारों side equal हो जाए तो वो square बन जाएगा. Now for rectangle, square has all the properties of rhombus. वही लगा दो, square has all the properties of rhombus. Therefore, all squares are rhombuses. Okay. Now next question, all squares are not parallelogram. True है या false? All squares are not parallelogram. False है. हमने properties में ही देखा. All squares have all the properties of parallelogram. इसीलिए ठीक है. All kites are rhombuses. All kites are rhombus. Rhombus के all sides are equal. Rhombus में all sides are equal. Whereas for kite, adjacent sides are only equal.
equal. Okay. Now F. Therefore, all kites are not rhombuses. All kites are not rhombuses, but all rhombuses can be a kite. Therefore, all kites are not rhombus. But all rhombuses are kite. ये वाला statement फिर true हो जाएगा. ये false है. But all rhombuses are kites. Rhombus kite बन सकता है. ठीक है? क्यों? क्योंकि rhombus की चारों sides equal होती और kites में adjacent sides equal होनी चाहिए. वो तो है. rhombus में all sides are equal. Kite में क्या है? Kite में adjacent sides are equal. अगर मैं ये adjacent sides सारी sides equal हो तो वो rhombus बन सकता है ना. अगर मैं चारों sides equal कर दूं, if all sides are equal in kite, then it can be a rhombus. Therefore, all rhombuses can be a kite. Now next, all parallelograms are trapezium. True है. Okay. From properties. Next. Now next, all squares are trapezium. ये true होगा या false? ये भी true होगा. ये भी true होगा. Okay. Next question. Identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length. कौन से quadrilaterals में चारों sides equal होते हैं भैया? Rhombus में होता है और किस में होता है? Square. Okay. Next, all four angles are equal. ये किस में possible है? सिर्फ दो ही है, square and rectangle. Simple. चलो next one. Explain how square can be a quadrilateral. Square को हम quadrilateral कैसे बनाएंगे? Because it is made up of four line segments. Four line segments. या बोलो four sides. It is made up of four sides. Therefore, a square can be a quadrilateral. Okay. Therefore, square is a quadrilateral. Next, second one देखो. Explain how a square is a parallelogram. Square is a parallelogram. कैसे करेंगे हम? Already हमने properties में देखा है. Square has all the properties of parallelogram. Therefore, square is a parallelogram. Simple. As it has all the properties, it has all the properties of parallelogram. Therefore, square is a parallelogram. Simple. Third one, rhombus. Square is a rhombus. How can you say square is a rhombus? चलो करेंगे हम. Square is a rhombus. देखो मैं ऐसा लिख सकती हूँ. Square has all the properties of parallelogram. All properties of parallelogram. Same way rhombus भी सारी satisfy करता है all properties of parallelogram. दोनों parallelogram है तो I can say that square is a rhombus. As they both satisfy the properties of parallelogram from 1 and 2, I can say square is a rhombus. Very simple. Next one. Why a square is a rectangle? ये कैसे prove करेंगे हम? Square is a rectangle. Same way, square has all the properties of parallelogram. Properties of parallelogram. Same way, rectangle also has all the properties of parallelogram.
all angles are 90 degree, यहाँ पे भी all angles are 90 degree, therefore square is a rectangle. Simple. चलो next question. Name the quadrilateral whose diagonals bisect each other. ऐसे कौन से quadrilateral है जिसके diagonals bisect करते हैं एक दूसरे को? तो कौन से है भैया? रोम्बस है एक, रोम्बस, फिर कौन आएगा? पैरेललोग्राम के भी होता है बाइसेक्ट, फिर रेक्टेंगल के भी होता है और स्क्वायर के भी होता है। सिर्फ किसके नहीं होता है? काइट के। ठीक है, नेक्स्ट, which quadrilaterals are perpendicular bisector of each other? Perpendicular bisector of each other, जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन से है? रोम्बस एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर। और रोम्बस एंड स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, whose diagonals are equal? किसके डायगोनल्स इक्वल है भैया? स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। अगर सपोज ये मेरा रेक्टेंगल है, उसको मैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बनाना है मुझे, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? ठीक है, सपोज मैं इसे नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। ओके, कंसिडर रेक्टेंगल ए बी सी डी। कंसिडर रेक्टेंगल ए बी सी डी। डायगोनल्स लाई विद इन द, देखो इसके डायगोनल्स लाई विद इन द रेक्टेंगल होंगे, डायगोनल्स अंदर ही है। ठीक है, इन अ रेक्टेंगल diagonals lie within, बराबर अंदर ही है उसके डायगोनल्स, therefore it is a convex quadrilateral. Therefore it is a convex quadrilateral. Easy peasy lemon squeezy. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो हमें क्या दिया गया है?